Gang, what is good? Back again, another Krishna reaction. This is the ongoing, continuing beef between him and Femiway. Anyway, it's a force of habit at this point. So this is the fourth installment, I think, for Krishna. And this is production by Pendo46, Machayenge, I think that's how you say it. Shouts out to Savage Guy for providing the English subtitles for man like me so that we can hear the absolute savagery that is Krishna. When he's in his diss mode, when the cap's on backwards like Ash from Pokemon, he's a deadly force to be reckoned with. So I know this is going to be a long one. I didn't want to put this, I could have done this early hours of this morning. I apologise. I wanted Larry from Parked Up Anywhere to get his out first, so please go and watch that. Obviously check his stuff out. He catches balls like it's his job, because it is our job. So without further ado, like, comment, subscribe, and let's go. Oh. Lil Bunty. I'm sorry, we're going to have to go back for that little bit. He's put something in there. What's he done? Pendo46 is a producer of Anyway, and Machayenge is the most famous Anyway's commercial series of songs, and he continued that series till Machayenge 3. Okay, so Krishna's sort of saying that he's building upon what Anyway's already done. Okay. And Pendo46 is the producer, so would Pendo46 have had to lease him this beat? Because then he's kind of implicit within the beef, you know what I mean? Could be deep. Lil Bunty. No Bunty. तुम्हारे अब्बू आ गए फिर. Daddy's home. पापा आप फिर आ गए? मुबारक हो मिली ये मौत. तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत. बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल. Okay, so at the top it said that he entered the track the same way he did in See That Makeover, and I believe that was the one where again, like Amili from Lil Wayne, he came out of the trailer. But this one feels a little bit more dark, so maybe he's saying like, okay, last time I went light on you, this time I'm going a lot darker. That's why the tone's so dark. Ugh. Unreal, man. मुबारक हो मिली है मौत. तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत. बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल. इसके मुंह से टपकेगी लार, रैप का दीपक का लाल, क्यों आके मरारा हर बार. मैं खारा करारे, तू कोटों से कर्रा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब. कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट. वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप. अभी नंदू को सड़ेगा ये बंदूक, मदर चोट पे. Sorry, the way that the beat dropped, and then obviously his bars as well. Like, Anyway's done a lot of that. He's come with the dick talk. Krishna just does it in a more palatable way for the western side of the world. Do you know what I mean? What's this? Now Nandu, Abhi Nandu. Krishna in his previous line said Vartaman, which means present. And here he says Abhi Nandu. Abhinandan Vartaman is an Indian Air Force fighter. Shit. And there was an airstrike that happened in Balakot, and he was the hero of it. Okay. So now somebody who's a hero is going to put bamboo in your arse. I'll drop bombs on this motherfucker like Balakot. Okay. So he's saying he's the hero. He's the hero. मैं खारा करारे, तू कोटों से कर्रा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब. कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट. वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप. अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे बाला कोट. लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल. सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल यू वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का. पर गांड दे रहा बार बार, 4 फुट का लिली पुट, ये करेगा क्या मार धाड़. रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़. Jesus Christ, that forefather bar was fire. 4 फुट का लिली पुट, ये करेगा क्या मार धाड़. रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, अब ढूंढने पे. I'm sorry, did he just mention Lilliput? What's that again, giving his ass again? 4 feet Lilliput, how can he fight? So that's that Gallagher, what is it? Gallagher's Island. I swear it's Gallagher's Island. People of Lilliput. Yeah. So that's, what is it? It's Gulliver's Island. Is it Gulliver's Island or Gallagher's Island? Bro, my mind, all over the place. And that's because his bars, all over the place. He talks about so much. It's so difficult to condense all of that into like a palatable fucking explanation for you all. Do you know what I mean? How can he fight? I'm a giant compared to him.
Damn. बम लगे वाला गोट लूड़ान हर बास बोले भाई साहब अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली वांट इज लोड़ा से शौक है मलाई का हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार 4 फुट का लिली पुट ये करेगा क्या मार धाड़ रिग्रेट करे तेरे forefathers अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे Your forefathers are regretting. If we search, then you'll find forefathers of yours. Jesus Christ. So he's saying that 4 people have already sunned him. 4 people have already sunned him. So obviously he's talking about him. I'm guessing Raftar. Who were the other 2 people that have dissed? Anyway, please let me know in the comments. He's saying your forefathers are regretting. So we've dissed you. We've buried you so many times. Your forefathers spinning in their graves. Jesus. जानते हैं बंटी है पुसी वाली वांट इज लोड़ा से शौक है मलाई का हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार 4 फुट का लिली पुट ये करेगा क्या मार धाड़ रिग्रेट करे तेरे forefathers अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइट I know he's talking about jinns, and I know that jinns are like demons. They're like devils. You know what I mean? That's why Jin in Tekken. That's why his name was Jin, because he was a devil. 4 इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइट हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे के बारे कुछ your Jasmine, obviously he's extending the Aladdin bar there. Aladdin, Jasmine. I heard a bar one time in a battle rap that was something like your girl's such a slag, she'd let Aladdin, like a lad, like a man, she'd let Aladdin fire. 4 इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइट हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे बंदी के बारे कुछ बोलो ना पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ Your girl was spread all over Punjab like corona, bro. Talk about relevant bars as well. Talk something about your girl, she was spread all across Punjab like corona. फैली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना हेलो साइबर पुलिस तू लौड़े का रैपर हम चलते हैं चौड़े में करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में no tax no G. That's what I'm saying. How can you be claiming these sets and you don't even live there anymore? You live in the posh sides. This is what pisses me off about Drake, guys flagging up the 6. I don't even live there. Don't even be around those areas, you know? Ugh. Come off it, man. And it seems like he's doing exactly the same thing. Talks about representing Antofil, but he lives in a corner of Navi Mumbai. पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में no tax no GST ये जानते हम बापे no PSG मुंबई के सड़कों पे PhD. What did he just say? He said Mbappe. पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में no tax. GST stands for goods and service tax. Yep, Mbappe sounds like Mbappe. Oh, they know where dads. No PSG. So he's using... This is what I'm saying. Like, how can Emiway fans tell me that Krishna's not better than Emiway? He's making bars that not only... Like, Mbappe is a famous footballer, so he's linked that to PSG. But also, Humbap is a word in his language that also flows with the same fucking thing. Like, it translates to English perfectly fine. Emiway's bars don't translate. I've got to apparently know the fucking language and the whole history of India to understand his bars. That's not a good rapper. That's not a good rapper. I'm saying, you know? पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में no tax no GST ये जानते हम बापे no PSG मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब pretty huge dick in your BSc मैंने मानी कभी हार नहीं तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं सब छीनू तेरा कह ले तू चील मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन. The amount that they're like calling each other, like it's almost like they're dissing each other for being gay, but then they're talking about doing gay things to each other. Like, fam, you're either gay or you're not. Do you know what I mean? Like, I'm not on anybody's side here. I just like the best thing. And out of Krishna and Emiway, Krishna makes the better thing. It is just what it is, you know what I mean? But they're both on some gay shit. म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइक I thought all my days I thought the bar was about Monty Python.
I killed snakes, pythons and are frightened. Sonny, listen. Me, Ali, no fighting license. Oh my days, Sonny, listen, as in like Sonny Liston, the fighter, the boxer. Ali with no fighting license, so Muhammad Ali. Sonny, listen, Sonny Liston. I'm Ali with no fighting license, like I'm dirty boxing. And I'm that good, I'm like Ali level of good. Jesus, the Sonny Liston bar. And I'm surprised Savage Guy didn't get that too. That's crazy. चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन तू छोटा सा छोटू यकीन कर 4 फुटिया तू. So then he carried it on by mentioning Mike Tyson as well. Let's go, man. This is what we're here for, the bars. If you want punch lines, punch lines, then on the mic I'm Tyson, Mike Tyson. They were dashing away, so I put hyphen in their life. And Jesus Christ, high level. चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन तू छोटा सा छोटू यकीन कर 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर. Oh my days, this ain't Narnia come out of the closet, because obviously in Narnia they went through the wardrobe, the Lion, the Witch and the wardrobe. That's crazy. Crazy. What did he say? In Chronicles of Narnia, yeah. Lion, the Witch and the wardrobe. They traveled to another world through a closet. Yeah. Awesome. लौड़े की बात ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी कृष्णा को नहीं जानता था now you know of me तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी सामना तुम करोगे तो सामने ही मत. And I have to say, Sazai Mort was honestly one of the best drill tracks I've heard for a very, very long time. If you haven't checked out my reaction, please go check that one out. But that track was fire. And he kind of did copy the flow. I see what he means. जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला है. I've heard that flow before. That's gonna heard that flow before. Oh wait, what did that? Krishna copied Hemingway's flow. Yeah, okay, it was there where I heard it. कश्मीर का मैं थरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है लगती तू मिया खलीफा चाहिए है किन्नी तारीफा. You like Mia Khalifa, how much praise do you want? Like, and obviously in the Asian communities, Mia Khalifa was given a bunch of shit because she shouldn't be selling her body, which I completely understand. She shouldn't ever have sold her body, but you know, is what it is. 2022, women can do what they want with their bodies, including killing children apparently, but who am I to judge? बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है लगती तू मिया खलीफा चाहिए है किन्नी तारीफा I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA whole family holding flowers तेरे golden bars को दे दूं golden shower अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker I ain't talking about no golden hour तू कोठी में बैठा मैं बैठा हूँ कोठी में लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है साफ देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है बिस्तर में करता ये नौकरी है यू चल बोजड़ी के वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन. So obviously he called him like a TikTok girl and then used the TikTok to like break the beat up. That's genius. Screaming like a prostitute. You like dollar signs. Now Bunty is so frustrated. So obviously you like dollar signs, so because obviously he's got the dollar sign in his name. Let's go. I'm here. तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है साफ देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है बिस्तर में करता ये नौकरी है यू चल बोजड़ी के
वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो ये राउंड 2 now about to get at you So is that oh shit, it's gone back to the other beat. Jesus Christ, so that Swalina, is that, I think that's Emiway's girl or his wife. I think. स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो ये राउंड 2 now about to get at you सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों गिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा Snakes and Medusa acting like a statue, obviously. Medusa with the snakes in her hair, whenever she looked at you, you turned to stone. Let's go. स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो ये राउंड 2 now about to get at you सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू ये जगह में ना आया जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू हिज पीप्स हाँ लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से What did he say about Khabib? Was he dissing Khabib? Please don't, bro. Please don't. You'll die. जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब No way you're Khabib. Disloyal to his peeps. Seems you're from Dagestan. Khabib is from Dagestan. Dagestan in Hindi means land of betrayal. Oh shit. Wow. That's kind of crazy that the name of a country in your language means land of betrayal. That's crazy. So my question is, was Dagestan called Dagestan before you guys made it the land of betrayal? Before you guys put that meaning to that word, did that word already exist? Or did that word already mean land of betrayal and then somewhere was created called Dagestan? That's what I want to know. Historic heads in the comment section, please. जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू हिज पीप्स हाँ लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक शौक नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल This is what I'm saying from a diss. You need to come with actual events that happened. Do you know what I mean? And he's saying there, look, you saw us, and instead of doing something, you took a fucking picture. Like, is it war or is it peace? Do you know what I mean? Because you're giving mixed signals now. Femi way. टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना आए तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अफेक्ट Like, bro, ad revenue is a thing. AdSense is a thing, bro. YouTube pays very well. I know. So I know for a fact Krishna needs his money, bro. And I know Hemingway's probably got millions of views on that. That gave him thousands and thousands and thousands of pounds. And yet he's never gone out of his way to do a favour for Krishna. Yet Krishna gave him a feature when he was popping. Fair enough, Hemingway might have been popping as well, but Krishna's name would have added to that. So the least you could have done if you weren't going to give the man any money was do some favours for him, link him up in the business, set him up with some other features that might benefit the both of you and benefit, you know, DHH as a whole. That's supposed to be the point. Fuck all this war and shit. You're stronger together, you know. एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अफेक्ट्स ले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस I'm the only one doing it right now बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे कमर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैप I don't care for ransom सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बंटी बधाई हो मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल कैसे तू सहती है रोज मिलेगी चूता Bro, the boy considers me an idol, so what the fuck are you saying? Jesus Christ, and that's the best rapper on your label saying that Krishna's his idol.
मेरी पंचलाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल And the guy's name's Gosh, so obviously he tied that in by saying, oh my gosh. Do you know what I mean? So he said his name without saying his name, and then in the next bar mentioned why he said his name. Do you know what I mean? Fire, bro. बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज रुक नका तू नाच कटवाई है नाक पर मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है लगता है बंटी का तू ही चबाती है इस पे तो लगा हमें मजबूत बंटी का हजाम है अद्भुत झांट जैसे बालपुरी हवा में हंसमुख तेरा करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब चूम उसके तलवे तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े गाने में केले पकेला खाओ नजदीकी I wonder what he meant by that, like you guys even wear clothes in the pool. Like, did he mean like you guys aren't even comfortable anywhere? Do you know what I mean? Because if you wear clothes in a pool, you feel mad uncomfortable, it's like sticking to you and shit, and you're not supposed to, so I don't know, maybe he meant that. Calling Hemingway monkey. यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े गाने में केले पकेला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश तू तो जन्नानी जनाना में Cause I've been thinking about rap sounding hip about कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो That's what I'm saying. Oh my days, as if Krishna's he's just directly said exactly what I said in my reaction on Hemingway's last diss. I said exactly the same thing. Like, in English, it doesn't make any sense when it's translated. So you're telling me I've got to learn Hindi in order to get his raps? He's not a good enough rapper that I'm even tempted to try and learn the language to learn his raps or understand what he's saying. I don't know. They gas him up too much. sounding hip about कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की शौकीन अवाम फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और 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 माँ बाप के बारे में बोलेगा इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा और ड्रेस है तेरा मेरे पास अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा एक और बार बोल उनके बारे मामला रैप के पार ही जाएगा बंटी तो पूरा है पुसी पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए Yo, bitch that's mad. That's absolutely crazy. Krishna's the GOAT. Krishna's the GOAT. Like there isn't a debate at this point. There really isn't a debate at this point. How can there be? How can there be a debate at this point between Hemingway and Krishna? There is no debate. Whether it's in Hindi or in English, I don't care. There is no debate. Even that last bit, that little flow, like where he was rapping and he was rhyming it, but he was almost talking, and that felt like the most threatening bit about it. Like he didn't mention his own parents or the fact that Hemingway mentioned his parents. He didn't mention that for the whole record, and then at the end addressed it almost on like a personal level, like you spoke about them and I now can't forgive you for that. So whatever comes your way, you better be fucking ready for it, just for saying those words. And you knew what you were doing when you said it. So whatever comes your way, you gotta be ready for. Come on, man. That was perfect. Machayenge 4, perfect. And it was, like he said, it was much better than the 8 minutes that we got from Hemingway. And it was only 6 minutes. So, I don't really know what more I can say. If I missed any bars, please let me know. If you guys, caught any bars or any intricate meanings that you think might have linked parts to other parts, please let me know in the comment section. Other than that, it's been your boy TeddyGreyOnStuff. This time I genuinely believe again, Krishna won. Not just based on flows or lyrics, but the way he mingled the middle part of that beat as well and used
Emiway's own flow against him from that grind, was it called? Used it against him. It's genius. It says these are exactly the sort of things that you should do when you're in a rap beef. Do you know what I mean? He's doing everything. He's being direct, he's being personable, he's still being relatable. The flows aren't wishy-washy, they're not everywhere. It's just a solid flow, which means that he sat down in a zen state and thought about all this at the same time. Do you know what I mean? He really puts his work into his craft, and you can tell that. TeddyGreyOnStuff, deuces.